Yes, ma'am. I'm just starting. मैं इस शाम की शुरुआत करना चाहूंगी अभिनेता आयुष्मान खुराना की कविता से, जो कि उन्होंने लिखी है पुलवामा हमलों में शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए। देश का हर जवान बहुत खास है लड़ता जब तक सांस है, परिवारों के सुखों का कार्यवास है, शहीदों की मम्मा का अंतिम उपवास है, उनके बच्चों को कहते सुना है पापा अभी भी हमारे पास है। A very warm good evening to one and all present here. I, Preena, NSS in charge of outdoor exposure and ruler camp and social media handler of Gandhi Study Circle. And I, Ananya, NSS volunteer, welcome you all in this session. Today, National Service Scheme Unit is collaborating with Gandhi Study Circle of Aditi Mahavidyalaya, organized a webinar to honor Pulwama martyrs on the topic "Janne wale sipahi se poocho," our tribute to the heroes of Pulwama and unforgettable stories by Captain Yashika Tyagi ma'am. We are very honored to have you ma'am with us. This session had made both the society together to pay tribute to the Pulwama martyrs, as it took place on 14th February on Valentine's Day. A wave of grief and anger has struck the entire nation in the wake of devastating terror in Jammu and Kashmir in Pulwama district. The program is facilitated by efforts of Miss Prerna from Aditi Mahavidyalaya. We are honored to have our principal ma'am, Professor Mamta Sharma, with us and has been a source of constant guidance and motivation for all the NSS volunteers. Our lovely program officer, Dr. Mali Devi Savaria, National Service Scheme, our passionate and innovative professor, Dr. Sunita Parikh, co-convener of Gandhi Study Circle, Dr. Sunita Dhankar, co-convener of Gandhi Study Circle, and Dr. Juhi Bhatnagar, member of Gandhi Study Circle. Without their efforts, these events would not be possible. And last but not least, I welcome all our dedicated volunteers present over here. We are extremely happy to welcome you all. Now, I would like to invite the principal ma'am for her inaugural address of this event. Ma'am, over to you. Um, Thank you, our dear NSS volunteers. I guess Principal Ma'am will join in between, so we can proceed with the next part of this program. She'll join us in between. She's in a meeting because our colleges are going to open from 17th February. So there is an emergency meeting. Yeah, she'll join us in between. Ananya. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, for the opening remark of the event, I would like to call Dr. Sunita Parikh, ma'am, Dr. Sunita Dhankar, ma'am, of Gandhi Study Circle, followed by the introductory by Mali Devi Savaria, Program Officer of National Service Scheme. A very good evening to all of you. I'm Dr. Sunita Dhankar of Gandhi Study Circle. We all, the whole nation was shocked when on 14th of February 2019, the Pulwama attack on the CRPF convoy that was passing through Jammu and Kashmir highway, that happened and we lost a lot of our soldiers. We've had a large number of terrorist attacks in the state of Jammu and Kashmir, even in the northeast. But this was at an unprecedented scale, and the response from the nation was very strong. And I'm sure we will be able to get a first-hand account from Captain Tyagi, and she'll be able to, throw a insider's perspective on it. Uh, I myself have interacted with quite a few people from the Air Force who had immediately flown over to that place as soon as this attack happened. My brother, my husband, and almost everyone is in the defense forces. So we were impacted by it in the sense of the sudden, calling of the people who were on holidays, and people were called back to their stations, and there was this strong response which sent a message that this kind of an act will not be tolerated. And over to you, Dr. Mali. I don't know if Parik ma'am has joined.
First, I I am would in like to meeting. invite Yes. Dr. Sunita Parikh ma'am. हाँ, मैं सुन रही थी। काफी बच्चों ने कहा कि वो हमें बोल रहे थे कि हमारे एफर्ट्स है। मुझे लगता है कि ये हमारी जो पूरी टीम है उनके एफर्ट्स है कि हम आज इतना जो संवेदनशील मुद्दा है पूरे देश के लिए, आतंकवाद जैसे टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे रूटीन, हमारी रोज की लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं कैप्टन यशिका जी जो आज हमारे साथ में है, जो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेगी। मैं मान के चल रही हूँ कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कुछ अंदर से ही अपने आप से निकल के आ रहा है कि कैसा अटैक था वो, किस टाइम के ऊपर जिस तरीके से हुआ था। यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया के लगभग सभी देश जो थे उन्होंने पुलवामा अटैक जो हुआ था उसको क्रिटिसाइज किया था, उसकी घोर निंदा की थी। और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत है वो हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहा है। और उस समय भी हमने कहा था कि हम अपनी इस हमले का, अपने जो शहीद हुए हैं साथी, उनका बदला लेंगे। और ये सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू फिर हमने किया भी था। तो मैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगी, और मैं माली को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रोग्राम को आगे लेकर जाए। माली। थैंक यू सो मच सुनीता पारिक मैम, सुनीता धनकर मैम। मेरा कहना, मैं, अब आप लोगों ने इतना सब कुछ कहा है तो मैं सिर्फ सबसे पहले तो मैं हमारी प्यारी सी यशिका जी को उनका अभिनंदन करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ आज अपने विचार साझा करेंगी। और हमें, मैं मानती हूँ कि कभी भी जिन लोगों ने हमारे देश के लिए प्राण दिए हैं उनकी यादों को हमें धूमिल ना होने दें। हम सब मिलकर उनकी यादों को अपने दिल में बसाए रखें, उनके परिवारों को अपने दिल में बसाए रखें। और मैं यशिका जी से एक दरख्वास्त भी करूंगी, आज जो वो नैरेटिव्स हमारे साथ, वो जो बैकग्राउंड हमारे साथ उन शहीदों के साथ हम सबके साथ शेयर करेंगी, उन उसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स का एक स्टेप आगे बढ़कर ये साथ दें कि उन परिवारों के साथ हमें हमें कुछ मिलकर काम करने का मौका दें, ताकि हम इस पूरे प्रक्रिया में हम भी अपनी राष्ट्रीय भूमिका निभा सकें। और मैं जानती हूँ कि आपका ये जो आज हमारे साथ वेबिनार है, ये उन यादों को पुनर्जीवित करेगा और हमारे जितने एनएसएस वॉलंटियर्स हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल और एक नेशनल मेमोरी तैयार करेगा। यादों को बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम मैंने रखा जाने वाले सिपाही से पूछो। कैसे वो यादें और कैसे वो अपने परिवार को, अपने देश के लिए सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ता है। ओवर टू यशिका जी। थैंक यू। Am I audible? Yes, you are audible now. Okay. I just want to convey in the very beginning a big, huge thank you कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम करने की सोची और पुलवामा जैसे मुद्दे के ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर आवर ब्रेव्स। और जब जब साल का ये महीना आता है, फरवरी का महीना, प्यार का महीना, we all talk of Valentine, we all talk of uh, red roses. But I think for a Fauji, we remember Pulwama. 2019 में फरवरी के दिन, 14 फरवरी 2019, जब ये पुलवामा का अटैक हुआ, it changed lot of things. Lot of things. Not only for India, it changed a lot of things for Pakistan, it changed a lot of things for the subcontinent. And I think, in a larger perspective, it changed a lot of things globally. It brought India out on the forefront. It made India look like a country that is going to respond and respond effectively.
तो आज जो मैं आपके साथ ये पुलवामा की कहानी शेयर करूंगी, मैं चाहती हूं इसको आप लोग थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ देखें, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर बडिंग प्रोफेशनल्स। आप आगे बड़े होकर जिंदगी में अलग अलग तरीके के जॉब्स करेंगे। कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, कोई फौज में आएंगे, कोई एयरफोर्स में जाएंगे, कोई जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में बढ़ेंगे आगे। लेकिन आप कितना भी आगे बढ़े, आप देश को पीछे नहीं छोड़िएगा। ऑलवेज रिमेंबर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस नेशन। और ये सिर्फ कहने के शब्द नहीं है। आई एम अ कारगिल वॉर वेटरन। मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने लड़ाई के हर उस दिन को जिया है। एंड आई एम सो प्राउड टू से that in Operation Vijay, I was the first women officer from logistics wing of Indian Army to be part of battle zone. I was there from the moment that first shell landed on Indian soil till the time we kicked out last Pakistani, dead or alive. I was there. So my learnings are totally different. और आज ये जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये मेरे ख्याल से अंदर से कहीं बहुत बहुत इमोशनली आता है। मेरे से पहले जो एक मैम बोल रहे थे दैट उन्होंने अपने परिवार में ये देखा, her husband, her brother, she has seen how such incidents affect the lives. We are never the same again. 14 फरवरी माने अब आज हम 12 तारीख में हैं और पुलवामा की घटना हुई आज से, मतलब कहने को तो चंद साल हैं, 2019 में, लेकिन आज भी हम भूलते नहीं हैं उनको। The 40 brave CRPF jawans, what were they doing? What were they doing? They were part of a convoy. अच्छा, आप लोगों के नॉलेज के लिए बताऊं कि कॉन्वॉय किसको कहते हैं? जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ, फौजी गाड़ियां एक साथ एक टाइम पर एक के पीछे एक लंबा रास्ता ट्रेवल करती हैं, तो हम उसे कॉन्वॉय कहते हैं। इस कॉन्वॉय में 5 गाड़ियां हो सकती हैं, 10 गाड़ियां हो सकती हैं, या शायद 150 गाड़ियां भी हो सकती हैं। तो सीआरपीएफ का जो ये कॉन्वॉय चल रहा था, इट वाज कैरिंग वेरियस सीआरपीएफ बटालियंस टू द प्लेसेस ऑफ देयर ड्यूटी। कुछ जवान छुट्टी काट के आए थे, कुछ जवान छुट्टी जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने परिवारों से मिलने की खुशी थी, या शायद एकदम से परिवारों को पीछे छोड़ के आने का एक गम भी होता है। वो कहते हैं ना कि फौजी अपने बटुए में अपनी पूरी पूरी दुनिया समेट कर चलता है, हाथ में हथियार पकड़े हुए, सिर पर हेलमेट, अलर्ट आंखें, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान। They were going to their place of work where they were to be deployed in protection of civilians. लेकिन हुआ क्या? फरवरी की सुबह यदि आप में से कोई श्रीनगर कश्मीर की तरफ गए हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि वहां इस समय मौसम कैसा होता है। मार्च तक बर्फ पड़ती है। तो उस समय फरवरी की वो सर्द सुबह बर्फ पड़ी हुई थी पुलवामा में, धुंध कोहरा सा था, और उसके बीच से ये कॉन्वॉय गाड़ियों का निकलते जा रहा था। सड़क पे बगल से नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था और एक तरफ से फौजी कॉन्वॉय, कि एकदम से एक सिविलियन नॉर्मल एक व्हीकल, एक सिविलियन व्हीकल जो फौजी व्हीकल नहीं थी, एक कार
फौजी कॉन्वॉय के अंदर घुस आई and it rammed against the vehicle, which was filled with CRPF jawans. और एकदम से धमाका हुआ, हाहाकार मच गया, चीख पुकार, धुआं, डीजल की बदबू, जले हुए मांस की बदबू और शहीदों की शहादत की खुशबू। यही थे sights and sounds of Pulwama. It was a Fedayeen attack, a car laden with 80 kgs or more of explosives. The impact was so strong कि कितने मील दूर तक वो धमाके की आवाज गई, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ और 40 जाने गई, 40 precious lives of CRPF jawans. टेररिस्ट को तो हम गिनते नहीं, टेररिस्ट की तो कोई औकात नहीं कि हम उसकी गिनती भी करें, लेकिन ये जो 40 जाने गई, और आप सबकी यादाश्त में होगा, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आप सबकी यादाश्त में होगा कि किस तरह से हम सब स्तब्ध थे. We were all in a state of shock in those initial hours when news started trickling in slowly, strongly. There was anger, there was confusion in the minds of the civilian population around कि एकदम से क्या हो गया. फौज की तो ड्रिल है, we immediately react, sorry, wrong word, we immediately respond. 40 जाने गई, एक बहुत बड़ा लॉस. देखिए, फौज हमेशा से हर तरीके के रिटेलिएशन के लिए तैयार होती है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप है which has to give the final order in any democracy. Military has to get the final orders from the legislature, from the government of the day. और इस समय गवर्नमेंट ऑफ द डे का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था. आप सबको वो विजुअल याद होगा जब दिल्ली के वो हैंगर में 40 कॉफिन्स थे and Prime Minister Modi was going from one coffin to another and placing wreath और उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे. I think he was just representing the nation. We all were feeling the same emotions. There was this seething anger inside. And then Prime Minister called a CCS meeting. It's a cabinet security meeting. The NSA is part of it. The security officials, the chiefs are part of it. And he just gave one line agenda. We have to avenge the death of our martyrs. And a free hand was given to the defense forces. फौज तो 2011 के बाद भी रेडी थी. When we had the Taj attack, Air Force तो तब भी तैयार थी. Then also the Air Chief of the day had told the government that we are ready. We have the targets. We have the necessary aircrafts which can execute the attack. But somehow we relied more on diplomacy. But this time we relied on our power, the superiority. And with this faith that was shown by the country,
great responsibility was placed on defense forces. You know, मुझे ऐसा लगता है आप सबको याद होगा that the entire nation was waiting with bated breath. सबको पता था हम कुछ करने वाले हैं और यकीन था कि हम कुछ करेंगे. उन शहीदों की बेवाओं की आंखों के अंदर झांक कर देखने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए थी. और जब तक हम बदला नहीं लेते ये हम कर नहीं सकते थे. So, Ma'am, you are on mute. when did I get on mute? Just right now. Okay. I thought that I have been on mute ever since. Chalo. Okay. Now this attack which was done by Jaish-e-Mohammed, हमको जैश-ए-मोहम्मद से और पाकिस्तान से जिसने जैश-ए-मोहम्मद को पनाह दे रखी थी उनसे बदला लेना था. Mission was very clear. What? This question was clear. Why? This rationale was clear. How? That was the only question that needed answering. And all the three chiefs discussed it all. ये decide किया गया that the answer, the reply to Pakistan is going to be decisive. फौज इस अटैक को अंजाम दे सकती थी. We could have done a surgical strike like Uri. We all remember Uri. We all remember 2016. What did we do? लेकिन कुछ सवाल कि एयरफोर्स आगे क्यों जाएगी, नेवी या आर्मी की तरफ से अटैक क्यों नहीं हुआ? I want you to think of these questions. Why Air Force? Okay. Why Balakot? बालाकोट जावा टॉक ही क्यों चुना गया और हमने जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर क्यों नहीं चूज किया? जब एयरफोर्स अटैक के लिए आगे जा रही थी तो उस समय आर्मी और नेवी क्या कर रहे थे? और जब हमने अपना टारगेट सोच लिया कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करना है तो क्या हम तैयार थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हमारी कंट्री के कौन से टारगेट्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान जिसके ऊपर अटैक कर सकता है? और अगर पाकिस्तान ने अटैक किया देन व्हाट इज आवर प्रिपेयर्डनेस? 14 फरवरी और 26 फरवरी इनके बीच का जो समय है, दिस वाज द टाइम ऑफ प्लानिंग एंड एनी प्लानिंग इज सक्सेसफुल. Any attack is successful only if there is an element of surprise. और जब हम इतनी बड़ी चीज करने वाले हैं और पाकिस्तान को पता है कि हम रिटेलिएट करेंगे तो हमने अपनी सीक्रेसी कैसे मेंटेन करी? They are very 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 interesting questions. अच्छा, चॉइस ऑफ एयरक्राफ्ट. उस समय हमारे पास सुखोई 30 था लेकिन हमने सुखोई 30 को अटैक के लिए क्यों चूज नहीं किया? एंड व्हाई डिड वी चूज मिराज 2000? Why did Air Force say that Mirage 2000 is the best bet? The questions are so interesting. This story is so interesting that if you just sit and listen closely, you will find that there are life lessons. There are professional lessons in each step of the planning. So I will take these questions one by one. And if you have questions, then you can just write them down and we can speak at the end. Okay? Acha. So I will answer the first question. Why did we choose Air Force
इसके दो रीजंस थे। पहला, we wanted to give a befitting reply to Jaish-e-Mohammed because this attack was conducted by Jaish-e-Mohammed. अब Jaish-e-Mohammed का जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज इन बहावलपुर, दैट इज नियर टू LOC। लेकिन अगर हम बहावलपुर के ऊपर अटैक करते तो देयर वुड हैव बीन लॉट ऑफ कोलेटरल डैमेज, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है, आसपास बहुत भीड़ बाजार ये सब है। तो चूज किया गया कि हम पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर जाएंगे इन खैबर पख्तूनवा प्रोविंस एंड वी विल बॉम्ब द टेरर कैंप विच इज अ नॉन मिलिट्री टारगेट। अगर हम किसी मिलिट्री टारगेट के ऊपर अटैक करते तो जंग छिड़ जाती। सो वी हैड टू चूज अ नॉन मिलिट्री टारगेट away from population, away from populated areas. And the end report had said that बालाकोट, जावा टॉप के ऊपर जो टेरर कैंप है वहां आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप ट्रेनिंग लेने के लिए आया हुआ है। सो इट वाज अ वेरी पोटेंशियल टारगेट। अब क्योंकि बालाकोट इज वे डीपर इनटू द एनिमी टेरिटरी, तो हम यहां पर फौज के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करवा सकते थे। वी हैड टू सेंड इन एयरफोर्स। अगर LOC पे अटैक होता 3-4 किलोमीटर अंदर जाना होता, आर्मी वुड हैव गॉन एंड फिनिश्ड देम ऑफ लाइक वी डिड इन उड़ी। बट ये अलग ही तरीके का अटैक था। सो क्वेश्चन 1 आंसर्ड, that why did we choose Air Force and not Navy or Army? Now, next question. When Air Force was getting ready, when Air Force was chosen secretly, ये खबर बाहर आई ही नहीं, ये खबर सिर्फ 3 चीफ्स और कुछ गिने चुने लोगों के पास थी। चूज किया गया इंडियन एयरफोर्स को अटैक के लिए। आर्मी ने तैयारी शुरू करी कि जब हमारी एयरफोर्स अंदर जाकर अटैक करेगी पाकिस्तान के, और वहां से अगर रिटेलिएशन होता है, अगर पाकिस्तान अटैक माउंट करता है जमीन के रास्ते, तो इंडियन आर्मी वाज शोल्ड अप ऑन द LOC। धीरे धीरे स्टेल्थ मूवमेंट से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन साफरान, और हमने इंडियन आर्मी को पूरे अपने JNK बॉर्डर के ऊपर मजबूती से तैनात कर दिया। Indian Navy was already conducting a huge exercise in Arabian Sea called Theater Operation Readiness Exercise, TROPEX. They deployed their warships and submarines on the northern Arabian Sea. रिटेलिएट करना है पाकिस्तान, अब करके दिखाओ। जमीन के रास्ते आओगे तो फौज लगी है, पानी के रास्ते आओगे तो नेवी खड़ी है, और आसमान में तो हम तुम्हें मजा चखाने खोद आएंगे। So we were ready. Now, what preparations Indian Air Force did? The instructions were given to handful people, very handful people, that we are going to mount an attack, go deep inside Pakistan territory and hit Balakot terror camp. अच्छा, आप लोगों को ये जानना, I think it's just a very interesting information that we all the countries, खासकर वो कंट्रीज जो पाकिस्तान और इंडिया जैसी एक इक्वेशन रखती हैं, दे नो द टारगेट्स। ऑलरेडी हमने अपने टारगेट्स जो है वो लॉक किए रहते हैं। वी नो देयर लैट लॉन्ग्स, वी नो एग्जैक्टली कि उनके पास कौन से जहाज हैं और हमारे पास कौन से जहाज हैं। सो व्हेन वी हैड suggested 2-3 targets to
सिक्योरिटी एजेंसीज, उसके बाद इंट फोर्सेस का अपना काम शुरू हो गया। ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने लगी। इंडियन एयरफोर्स स्टार्टेड रेडिंग इट्स प्लेन्स, इट्स पायलट्स, इट्स प्लानिंग, इट्स बॉम्ब्स। अब ये ऑपरेशन बहुत सीक्रेट था, तो इसको नाम भी कुछ ऐसा दिया गया कि यदि पाकिस्तान इंटरसेप्ट्स पकड़ भी ले तो उसको इस कोई सीरियसनेस समझना है, so that the name itself sounds very casual. तो इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन बंदर। फनी isn't it? ऑपरेशन बंदर में यह तैयारी की गई कि हमारे मिग 2000s, सॉरी मिराज 2000s will fly off from ग्वालियर। नाउ ये बात स्टेशन के अंदर कैसे पहुंचे, ग्वालियर कैसे पहुंचे? नाउ एट दैट टाइम वेस्टर्न एयर कमांड के जो कमांडर थे, he was retiring and he was the one who was managing this whole operation. उन्होंने बोला कोई चीज चेंज नहीं की जाएगी, we are not going to make any new change in the system. क्योंकि फौज में जब भी कोई सीनियर ऑफिसर रिटायर होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं, तो उन्होंने कहा पार्टीज जिसमें उन्हें फेयरवेल दिया जाता है, तो उन्होंने कहा सब पार्टीज ऐसी चलेंगी, आई विल गो टू ग्वालियर। He went to Gwalior. There an inspection was called of air preparedness, जो उनका एक दासी इंस्पेक्शन होता है, टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, और पूरा स्टेशन में सारे जहाजों की तैयारी और उनको रेडीनेस, उनकी ऑप रेडीनेस के ऊपर काम शुरू हो गया, as if a normal inspection is taking place. लेकिन असलियत तो ये थी कि हम तैयार कर रहे थे ऑपरेशन में जाने वाले जहाजों को, मिराज 2000s को। So when this senior officer Hari Kumar reached there, he called the station commander, he called the pilots, and he gave this target to them. He told them about the mission, that how you are going to go inside the enemy territory. The information was given personally. There was no telephone used, no mobile used, only landline was used, because landline is supposed to be very, very secure. No mobiles were used. Pilots were not using any information on mobile. दिन चुना गया 26 फरवरी, जहाज चुना गया मिराज 2000। अच्छा, this is also a question that I gave you, that why Mirage 2000 and not MiG-21s or Jaguars or Sukhoi? देखो सुखोई अपने में एक बहुत जबरदस्त जहाज है, जब वो उड़ता है तो वो इतना गड़गड़ाता हुआ उड़ता है कि उसकी जो एक सिग्नेचर है, एक रडार सिग्नेचर है, वो बहुत बड़ा है, और जहाज बहुत दूर ही होगा तभी भी दुश्मन को पता चल जाएगा कि सुखोई आ रहा है। यू कैनॉट हाइड सुखोई। सुखोई इज लाइक किंग, लाइक बब्बर शेर, वो दहाड़ता आता है, लेकिन ये एक स्टेल्थ ऑपरेशन था। मिराज 2000 की खासियत यह है कि एक छोटा सा जहाज है, एजाइल है, और ये बहुत नीचे उड़ते हुए भी रडार को हुडविंक करके आगे बढ़ सकता है, और उसका आवाज बहुत कम होती है। और मिराज 2000 की कैपेबिलिटी ये है कि उसमें इजरायली मेड स्पाइस 2000 बॉम्ब्स लगे हैं। ये प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स हैं। हमने इनका इस्तेमाल ऑपरेशन विजय में भी किया था, जब हमने बिल्कुल तोलोलिंग और टाइगर हिल की पहाड़ी में ऊपर से पाकिस्तानियों के ऊपर प्रिसिशन बॉम्ब्स गिराए थे। तो इसलिए चूज किया गया मिराज 2000, क्योंकि हमको टेरर कैंप जाकर डायरेक्टली बॉम्ब गिराने थे, एंड वी हैड टू टोटली demolish that facility. Spice 2000 bombs can fire accurately from even farther than 60 kilometers. उनके आगे वो कंप्यूटर गाइडेड होते हैं, उनके अंदर टारगेट को फीड किया जाता है, दे कैन सी अ फोटोग्राफ ऑल्सो, उनमें कैमरा लगा होता है, दे गो देयर एंड दे हिट द टारगेट. So from 3 meters to 60 kilometers, they can fire anything.
तो इसलिए चुना गया मिराज 2000। अब कुछ वेदर रिपोर्ट ऐसी थी कि शायद उस दिन बारिश हो जाए। अगर 26 फरवरी के दिन जो सीक्रेटली चूज किया गया था अटैक के लिए, अगर उस दिन बारिश हो जाती तो शायद हमारा ये ऑपरेशन 2-1 दिन बाद के लिए टल जाता। सो एवरीवन वाज वेटिंग वेदर इट्स अ गो और अ नो गो। Finally, the night before, it was a go. We are going to get inside. Dead of the night. Dead of the night. India did not give any indication that it is going to be a night that Pakistan is going to remember. हमने एकदम रूटीन तौर पर हमने अपनी एयर स्पेस को इंगेज रखा था। राजस्थान में जैसलमेर के पास से सुखोई का दस्ता ऊपर उड़ा and started flying towards LOC. पाकिस्तान के जो जहाज आसमान में थे, जो उनके एयर पेट्रोल्स थी, they thought that Sukhois are going to come and bomb Bahawalpur, Jaish-e-Mohammed का headquarter, and they started going towards LOC to counter the Sukhois. जम्मू कश्मीर से MiG-21 का पैकेज उड़ा and started going towards LOC. पाकिस्तान को लगा that this MiG-21 package is going to attack the terror camp at Pokhara. Little did they realize that this is all decoy. असलियत में रात 3:40 ग्वालियर के बेस से मिराज 2000 का पैकेज उड़ा along with the air refuelers and AWACS. और उन्होंने बिल्कुल स्टेल्थ मेंटेन रखा. They did not fly towards LOC in the beginning. वो आराम से अपना उड़े, going from Gwalior to Agra to Bareilly. बरेली में उनकी मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई and from there they immediately turned and dashed towards LOC. पलक झपकते उन्होंने LOC क्रॉस करी. They were inside Pakistan's territory. They bombed precisely the Balakot terror camp. 5 targets were demolished. 4 से 5 मिनट में they were back in our territory. मतलब पाकिस्तान का जो नियरेस्ट जहाज था वो भी उनसे 100 किलोमीटर दूर था. पाकिस्तान डिड नॉट गेट टाइम टू रिएक्ट. ये नया भारत है. इट विल नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन. हम घर के अंदर घुसेंगे भी और घुस के मारेंगे भी. एंड दैट वाज एग्जैक्टली द सेंटिमेंट दैट इंडियन एयरफोर्स शोड दैट डे. नाउ successful attack. Indian Air Force called it strategically and operationally successful attack. हमारे किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा और हमने पाकिस्तान का टेरर कैंप तबाह कर दिया. We had avenged. कितने 100 टेररिस्ट्स मारे गए. पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा. बट वी वर रेडी. हमने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि हमें दुश्मन को हल्के में नहीं लेना है. व्हाट इफ पाकिस्तान रिटेलिएट्स, वी शुड बी रेडी. एकदम ऑप अलर्टनेस थी और वही हुआ जिसके लिए हम तैयार थे. जमीन के रास्ते आते तो आपको बताया है फौज तैयार थी. पानी के रास्ते आते तो इंडियन नेवी तैयार थी. हमला आया आसमान से 27 फरवरी. 26 फरवरी के दिन हमने बालाकोट किया और 27 फरवरी अगले ही दिन पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट. We were in operational readiness. The ops room was buzzing with the fight controllers. 7 fight controllers बड़े radars के आगे बैठे थे and they were totally keeping a hawk eye
over the airspace. Our combat air patrols were in the air. We were manning the airspace. Our fighters were ready to scramble. In just 2 minute notice, we were ready to scramble. 2 minutes notice मतलब जैसे ही हुक्म मिलेगा 2 मिनट के अंदर एयरबोर्न है जहाज. That is the meaning of scramble. 2 minutes. मैगी भी नहीं बनती 2 minutes में. And we were ready to have our aircrafts airborne, chasing enemy in 2 minutes. Now I tell you a glorious story. Glorious part of the story. This is the story of Abhinandan Vartman and squadron leader Minty Agarwal. Squadron leader Minty Agarwal was the fight controller. And she was sitting there with the team and looking at the radars, keeping a vigil. And just then she saw a huge radar signature coming in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक के बाद एक 20 से ज्यादा ब्लिप्स, रेड डॉट्स उनके रडार के ऊपर थे. रेड डॉट्स माने enemy aircraft. Enemy had chosen the deadliest, the most advanced aircrafts that were US made F-16s and Japanese JF-17s, along with their reserves, to enter into Indian airspace and destroy our brigade headquarters and our oil dumps and other lucrative targets. Minty Agarwal immediately spoke on the hotline and told the pilots, scramble. Less than 2 minutes, the package of MiG-21 upgraded Bisons was in air. Abhinandan Vartman was one of that package. वैसे बहुत जहाज थे और बहुत pilots थे. Minty Agarwal, along with the team, was keeping an eye on that airspace. She was the eyes and ears of those pilots. जब एक जहाज एक फाइटर के कॉकपिट में होता है तो उसका विजन बहुत लिमिटेड होता है, तो उसको गाइड करने का काम फाइटर कंट्रोलर्स का होता है. जैसे नाम ही सजेस्ट है, फाइटर कंट्रोलर will guide from where enemy aircraft is coming. किस तरफ से हमारे जहाज को टर्न करना चाहिए, किस तरफ से उसे एनिमी को एंगेज करना है, which is the likeliest target. And if you have locked down the target, which missile to fire. So fighter controller also gives the weapon solution. This was the task of Minty Agarwal and her team. And she was guiding Abhinandan Vartman along. Imagine, not only Abhinandan Vartman, एक साथ वो 4-5 pilots को guide कर रही थी. आप ये देखिए कि उनका सेंस ऑफ काम कितना ज्यादा होगा. her mental ability to analyze and respond, not getting into hyper mode, not getting overexcited. And she kept guiding the pilots. F-16s and JF-17s were way advanced than our upgraded MiG-21 old aircraft. But the way fighter controllers gave the instructions, it was a perfect dogfight in the air. ऐसे एक के पीछे एक, they were pouncing on each other and attacking each other and taking the dive and moving ahead, following the enemy aircraft. और finally एक करके हमने enemy aircrafts को अपनी airspace से बाहर खदेड़ दिया. Abhinandan Vartman was going behind an F-16. And then वो हुआ जिसकी कल्पना अमेरिका ने खुद नहीं की थी, जिसका वो जहाज है. That F-16s is going to be overpowered by MiG-21 upgraded Bison. ये ऐसे है जैसे जैगुआर के पीछे एम्बेसडर लगी हो और एम्बेसडर उसको स्पीड में हराते हैं. Minty Agarwal saw on her radar that Abhinandan Vartman has locked on F-16.
It was huge. She gave him the weapon solution. Abhinandan Vartman locked on the R-73 missile. She checked the coordinates for him and said, lock and shoot. Abhinandan Vartman pressed that red dot. Missile was released. Missile was fired so accurately that Minty Agarwal saw the F-16 fading away from the radar. That meant that it is hit. But Abhinandan Vartman was going on ahead. और जब आप जहाज आप आसमान में होते हो आपको नहीं पता चलता कि आपने LOC क्रॉस कर लिया. You don't come to know. And Minty Agarwal on her radar was seeing that Abhinandan is crossing the LOC, and she kept saying, turn cold, turn cold, turn cold. Turn cold का मतलब वापस आइए, वापस आइए. But Abhinandan Vartman could not hear on her radio because he had crossed the LOC and his radio was jammed. And just then, his aircraft was hit by a surface-to-air missile. His aircraft had taken a direct hit. Abhinandan Vartman was a very seasoned pilot. He ejected, but he ejected in enemy territory. आप सबको वो visuals याद होंगे where Abhinandan Vartman was caught and taken to enemy captivity. In 60 hours, he was released from Pakistan. पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ा, उन्हें prisoner of war बनाया, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अव्वल दर्जे की थी. We just opened all floodgates of our diplomacy and made it sure that Abhinandan Vartman comes back to us. 1st of March 2019, Abhinandan Vartman walked back inside from the Wagha border. Do you remember those visuals? चोट लगी हुई है उनके, वो शेर का बच्चा ऐसे खड़ा है. Walk with a dignity in life. That walk is walk of a lion. That मुझे चोट लगी है तो क्या हुआ? मैं prisoner of war रहा तो क्या हुआ? I was tortured तो क्या हुआ? I have faith that my country is going to bring me back. And the country brought him back. So these are stories, my dears, that you must listen and must know that जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं तो do it like there is never a second chance, that this moment may not come back. You have just this moment and you just perform. And so Abhinandan Vartman, when he came back and he did the work which was assigned to him so gloriously for hitting that F-16, to be taken prisoner of war, yet not divulging any details, and holding him up so in such a dignified manner, and keeping the An Shan of country so alive, he was awarded with Veer Chakra. And do you know, Minty Agarwal became the first woman of Indian Armed Forces to be awarded Yuddha Seva Medal. The first woman ever to have gotten that. We all know the name of Abhinandan Vartman, but Minty Agarwal's story is hidden somewhere. So today, I also wanted to take this opportunity to share with you the story of Minty Agarwal. So there are many life lessons here. When we listen to these stories, and especially today, I would like to share with you something that you all can take or imbibe from the life of Abhinandan Vartman. Now remember, he was sitting in the cockpit of an old aircraft, and the adversary was much stronger. He knew, because he
ही इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, ही नोज कि मेरे जहाज की कैपेबिलिटी क्या है और मेरे सामने वाले जहाज की कैपेबिलिटी क्या है. लॉजिकली ही न्यू द फैक्ट्स, लेकिन ये दिल मांगे मोर. ही जस्ट वेंट ऑन अहेड. ही डिड नॉट make this weakness of his aircraft be a weakness of his junoon and josh and himmat. He said, तो क्या हुआ अगर मेरे पास पुराना जहाज है. और देखो, तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, हमारे पेरेंट्स इतने रिच नहीं है कि हमें बड़े बड़े कॉलेजेस में डोनेशन से डाल सके, शायद हमारे पास इतने कनेक्शंस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है. यू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू डू नॉट हैव. बट लुक एट अभिनंदन वर्तमान. ही फोकस्ड ऑन व्हाट ही हैड and he did best with what he had. So whatever you have in your life, you make it your own samurai sword, and you will find that you are a warrior because you are able to win any situation. You know, वो जो last 100 मीटर होता है ना रेस का, वो सिर्फ आप अपने पैशन से और अपने जुनून से जीतते हो. When we used to run marathons in academy, 40 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 25 केजी का बैटल लोड लगा है, हथियार है, रेडियो सेट है, और उसके ऊपर पीरियड्स भी हो रहे हैं. And still you run. And you say, I'm not giving up. I'm not giving up. So सिर्फ वो जो 3 से 5 किलोमीटर का जो टाइम होता है ना, सिर्फ वो होता है आपकी फिजिकल फिटनेस. और उसके आगे जो बाकी मैराथन आप दौड़ते हो ना, वो आप मेंटल फिटनेस पे दौड़ते हो, मेंटल टफनेस पे दौड़ते हो. सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू हैव. गिराने वाले दुनिया में बहुत है, तुम सिर्फ अपना साथ. Another thing that I learned from Abhinandan Vartman's life is to stay calm in any adverse condition. Now, imagine his face. You remember his face? When he was caught, he was blindfolded और बहुत लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है. लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? क्या वो रो रहे थे? क्या वो चिल्ला रहे थे? क्या वो ऐसे ऐसे छूटने की कोशिश कर रहे थे? उनके हाथ ऐसे बंधे हुए थे. He was standing proudly. He was standing proudly. He was calm. कोई एक्साइटमेंट नहीं थी उनके चेहरे पे, कोई घबराहट नहीं थी. He was calm, composed, collected. So एक saying है that says respond and not react. तो आप किसी भी एडवर्स कंडीशन में हो लाइफ में, कितनी भी मुश्किल आ जाए, और मुश्किल तो हर एक की जिंदगी में आती है, मेरी जिंदगी में नहीं है, आपकी जिंदगी में नहीं है. Life is like an ECG. It will keep going up and down, up and down, up and down. And don't you ever think that life is going to be straight. Because if it is straight, my dears, you are dead. Your game is over. So मनाओ भगवान से कि ऊंचाई नीचाई रहे मेरे जीवन में. मैं जिंदा हूं. And so, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर. खुद पे यकीन करो. जिंदा हो तो. Stay calm. Situations adverse आएंगी, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा अपने आप को एड्रेनलिन रश दे दिया, you will never be able to find a solution to your problem. You will always keep going in a vortex, in a spiral. आपका दिमाग रीजनेबली सोच ही नहीं पाएगा. अभिनंदन वर्तमान जैसे ही इजेक्ट होकर जमीन पर गिरे, जब एक पायलट इजेक्ट होता है तो उसकी स्पाइन में चोट लगती है, कईयों के फ्रैक्चर्स होते हैं. अभिनंदन वर्तमान न्यू वेरी वेल द स्टोरी ऑफ स्क्वाड लीडर आहूजा. आपने सुनी है कहानी स्क्वाड लीडर आहूजा की? कारगिल की लड़ाई में उनके जहाज को पाकिस्तान ने हिट किया था. एंड ही वाज इजेक्टिंग, पैराशूट से वो नीचे आ रहे थे, पाकिस्तानियों ने उनको मिड एयर ही शूट कर दिया था. वो फिर भी जिंदा नीचे गिरे
तो उनको फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करके मारा था. Abhinandan Vartman knew very well that I can be shot like squad leader Ahuja. हो सकता है मैं जिंदा नीचे पहुंचू ही नहीं. But look at that calm demeanor. वो नीचे जिंदा उतरे. All of a sudden, he was surrounded by the locals. He did not know कि मैं इंडिया में हूं कि मैं पाकिस्तान में हूं. और जब उन पाकिस्तानियों ने अल्लाह अकबर बोला, he was so calm in his mind कि उनके पास जितने sensitive documents थे, वो वहां पर एक नदी थी, वो उसके अंदर एक तालाब था, वो उसके अंदर कूद गए और उन्होंने वो सब बारीक 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 टुकड़े करके वो पानी के अंदर डुबा दिए वो टुकड़े, कि मेरे पास जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो कॉल साइंस हैं, वो दुश्मन के हाथ में लगे. That is thinking, that is keeping a cool mind. और जब उन्हें पकड़ लिया गया, तो at that time also he was cool. And so this brings us to the next lesson of life that says have faith. Have faith in your preparation. Have faith in your organization. Have faith in the system. Abhinandan Vartman knew, क्योंकि एकदम से सोशल मीडिया में वो खबरें आ गई और पाकिस्तान से लोगों ने दिखाने लगे कि हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया. Abhinandan Vartman knew that his country is going to bring him back once they know he's alive. 60 hours, the nation brought him back. And my last lesson to you, my dears, is have a winning walk. Abhinandan Vartman, how he walked. मैंने आपको भी बताया, शेर की तरह चल के जा रहे थे. सब कुछ गलत था उनके साथ. Murphy's law. Everything that could go wrong went wrong with him. Yet, अच्छा, उनके अंदर चल रहा होगा जो चल रहा है, उन्होंने वो चेहरे पे नहीं आने दिया. उन्होंने वो बॉडी लैंग्वेज पे नहीं आने दिया. उन्होंने दुश्मन को ये खुशी नहीं मिलने दी कि मैं डर गया. और ये तब होता है, इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अगर आप अपनी हिम्मत रख सकते हैं, तो ये तभी होता है when you actually know it inside that I am unstoppable. And that is the lesson from Abhinandan Vartman. And so I tried to bring Pulwama, Balakot, and the story of Abhinandan Vartman and Minty Agarwal alive to you. I hope you all enjoyed it. And I really hope and pray that you remember the sacrifices of those 40 CRPF men. You remember the sweat and blood and toil of the defense forces to avenge the death of their own. So stand by each other. आप लोग मत बंटो. आप लोग आपस में एक रहो. Because when you are divided on petty grounds, then world is going to make merry. The world is going to enjoy because you are broken. But when you stand like a fort, then people think twice. So have faith in yourself. Have a bond among yourself. Have faith in your own mind, in your own heart, in your own organization. Have your value systems much in place. And think every time what I can do. If you get into a problem, always think what I can do. How to respond. What is my way out? So think out of box. And if that doesn't work, then I suggest erase the box. But think you must, because that is all you can do. Think. Your mind is the most powerful tool in your hand.
make use of it. Muscles आज हैं, कल नहीं है, लेकिन दिमाग आपके साथ हमेशा रहेगा. So these are the lessons. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. You have just made us live that moment with so much of energy you have. We are glad that you have with us, ma'am. If anyone have any questions, you can ask Yes, or unmute your mic. Prerna, before going for questions, I would like to invite Principal Ma'am to, yes, it's late, but ma'am can introduce. Ma'am is the only best person to introduce our very strong Yashika ma'am. So over to Principal Ma'am for her introduction that we were waiting for you, and also her observations and reflections. Principal Ma'am. Mamta Sharma ma'am is there. I guess. Mama, I think she left. Yes. Okay. I'll tell her to join in. Till then, start the questions. Thank you. Thank you so much. If anyone have any questions, you can ask or write in the chat box. I would invite Sunita Parik ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are. ओके, मैं त्यागी मैम जो बोल रहे थे मैं सुन रही थी, और सच में जिस तरीके से उनका जो लास्ट लाइंस में उन्होंने पूरा एक सीन सामने बनाया कि हमने दुश्मन को ये कहा कि आओ आप किस रास्ते से अब आ सकते हो, कहाँ से आप हमने उसको हर तरफ से घेरा. ये भारत की ताकत है आतंकवाद के खिलाफ, ये हमारी आर्मी की ताकत है, हमारी एक मानसिक ताकत है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ फिजिकली नहीं, हमारा जो मन है वो भी सशक्त होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए. और इसके अलावा जिस तरीके से अभिनंदन, नो डाउट कि जब ये अटैक हुआ था तो हम सभी काफी भौचक्के से रह गए थे, एकदम से हिल गए थे. और जो उन्होंने मौसम का स्टार्टिंग से जिस तरीके से उन्होंने हमें बताना, ऐसा लगा कि पूरा हम वहीं पहुंच गए हैं, हम वहीं पर खड़े हैं, और जिस टाइम पे अटैक हो रहा था हम सब उसको झेल रहे हैं. कुछ ऐसी फीलिंग्स मन के अंदर अपने आप से उठ के आ रही थी. और जो उन्होंने लास्ट में बताया अभिनंदन, सच में हम लोगों ने उनको जाना, पर उसके अलावा ऐसी स्टोरीज, ऐसे वाकया जिनसे हम लोग अनजान रहे, जिनको हम नहीं जान पाए. सो मच थैंक यू मैम कि आज आपने हम लोगों को, सच में ऐसी चीजें हैं कि जो थ्रू मीडिया हम लोगों के सामने आती है तो हम लोगों को पता लग जाती है, पर काफी सारे ऐसे अनफॉरगेटेबल हीरोज होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे वीर होते हैं, वहां पे वीरांगनाएं होती है कि जैसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पे हम लोग क्योंकि उनको जान नहीं पाते तो हमें पता ही नहीं होता कि उस टाइम पर कैसे सब कुछ वो लोग कर रहे हैं. हम लोग यहाँ अपने घरों के अंदर बैठे हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है वो झेल नहीं पाते, थोड़ा सा बारिश होती है ठंड बढ़ जाती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते. तो वो लोग तो उस वेदर में जहाँ पे कि -0 से भी कहीं ज्यादा नीचे टेम्परेचर को सहन करते हैं, अपने परिवारों से, अपनी फैमिली से दूर रहकर देश की सेवा करते हैं. तो ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा ही नहीं हम सबका ऐसा रहा होगा कि हम सब कहीं ना कहीं आपने हम सबको वहां खड़ा कर दिया था. ये जो पूरा टाइम चला आपका जो टॉक मैं सुन रही थी, ऐसा लगा कि हम वहां खड़े हो गए थे. सो मच थैंक यू दिल से आपको. सच में ऐसा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स जब हम करते हैं तो हम लोग बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा करते हैं, पर ऐसे जिस इशू पे हमने आज चर्चा की है, शायद ऐसा लगा कि उस पल को फिर से हमने देखा है. थैंक यू सो मच. Very true, Sunita ma'am. Very true. And I'm glad that Principal ma'am has joined us. Over to ma'am for introduction, for observation and reflections, ma'am. Thank you, Dr. Mali. Thank you, Dr. Sunita Dhankar also, Juhi also. And first of all,
It's the end, towards the end of the session, but what a session. Captain Yashika Hatwal Tyagi. I think we all of us were in the war room when you were speaking. I had joined the session in between when I got over with my meeting, but what a session. Congratulations. And I think Aditi Mahavidyalaya has been really fortunate with the efforts of NSS and Gandhi Study Circle are tributes to the heroes of Pulwama, the unforgettable stories. As Dr. Sunita was saying, हमें थोड़ी ठंड लग जाती है या थोड़ी गर्मी लगती है तो हम वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाते बट हमें सेफ रखने के लिए जो सरहदों पे जवान हैं जो आसमानों से हमें सुरक्षा मिलती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं थैंक यू सो मच डॉक्टर कैप्टन यशिका आई थिंक डॉक्टर यशिका I can see that she is an ex-army officer and a Kargil war veteran. I would like to invite you for your TED talk that would really inspire our students. If you can spare some time. Certainly, She's a ma'am. short commissioned lady officer from the initial batches of the women who entered the Indian Armed Forces. She's the first ever lady officer from the logistics wings to be posted in the high altitude areas of Leh and Kargil. Her active participation in the operations like Operation Rhino and Operation Vijay are some of the remarkable works on her part she has contributed to the Indian Armed Forces. And the reflection that I'm taking today is that she's amazing. She's amazing. So I request my team to coordinate for a TED talk with her. That would really Oh, yes, inspire us. ma'am. Thank you so much. Wow. Thank you so much, Yes, ma'am. ma'am. It's an honor. It's an honor. And since I belong to Olive Green family, I never leave a chance to speak and bring those glorious stories. कहते हैं ना फौज अपनी बात कभी नहीं करती फौज इतना कुछ करके आती है लेकिन बताती नहीं है तो आई थिंक ये हमारे जैसे लोगों का फर्ज बन जाता है कि टू ब्रिंग दो स्टोरीज टू द फोर फ्रंट and I'm glad that I got this chance to be speaking to youth. Thank you so much, ma'am. And I would love to be part of the TED event at your esteemed college. I would love to. Your audience is the young audience, the girls. Yeah. Truly inspiring. Thank you. Thank you, ma'am. Wow. Yashika, I had one question. Can you share some learnings from Operation Rhino? Okay, learnings from Operation Rhino. First, I'll tell you what is Operation Rhino. Operation Rhino is an umbrella operation under which many small or big operations of Northeast take place. So you see that in the jungles of Northeast, there are Northeast means seven sisters, seven states. We have got even till Burma border and on the other side till China. The whole area is quite, what do you say, active. And so Indian Army conducts many operations for the safekeeping of our borders. And Operation Rhino controls the entire thing. So I was the logistics officer whose responsibility was to equip and manage the logistic support to each and every single Jawan who's fighting in an effective war, battle. I mean, it's a matter of life and death. And when I reached there, the year was 1995. From 1995 to 1997, that I was part of Operation Rhino, I was given one line job description. And that was, your mistakes will come back home in body bags. And so there is no margin for error. And that taught me the importance of logistics. I keep speaking in a lot of colleges about supply chain management. And I share with young boys and girls
a new perspective of supply chain management. What it is. I mean, I have done supply chain management till Siachen Glacier, till jungles of Northeast. What happens if a Jawan is in eyeball to eyeball contact with enemy and there is no bullet in his gun that I have failed to give him as a logistics officer? I have not been able to provide him with a bulletproof. I have not been able to give him something that will make him an effective warrior. I think I should die that day as a logistics officer. So, Principal Ma'am has asked me about a TED Talk. I would also like to speak to all of you regarding supply chain management. I mean, that is also something you will get a very different and hatke perspective of what all happens in different parts of the country that army is deployed in. आपने कभी सोचा है कि जब सबमरीन डाइव इन करती है और 2-2 महीने तक पानी के नीचे रहती है तो उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? So there are very interesting perspectives of defense. Yes, Operation Rhino was very big learning exercise for me, experience. If anyone have any question, please ask. Anyone? There is one question in the chat box. I would read out for you. Ma'am, can you tell about the border lesson that Wing Commander Abhinandan ji learned? This question has been asked from Bhagya. I did not get the question. Please come again. Ma'am, can you tell about the border lesson that Wing Commander Abhinandan ji learned? Border lesson. Border lesson. Yes. What is border? What? I guess she is trying to say about the lesson that Abhinandan ji learned and the border was crossed. Yeah. I am reading here. Bhagya Sood is writing. Ma'am, can you tell about border lesson that Wing Commander Abhinandan ji learned? There is no border lesson. Abhinandan Vartman performed the duty exactly as per the way he was taught in academy. But after that, not Abhinandan, but Indian Air Force learnt a lesson. And we realized that our aircraft have to be upgraded, our radios have to be upgraded, that they do not get jammed in enemy territory. And that when the fighter controller is asking them or telling them to turn back, when they are saying turn cold, at that time Abhinandan Vartman को अगर आवाज आ जाती तो वो वापस मुड़ सकते थे, लेकिन उनको वो आवाज ही नहीं आई थी. उन्हें लगा वो इंडियन टेरिटरी में है. जब वो इजेक्ट होकर दुश्मन के टेरिटरी में भी गिरे तो भी उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो हिंदुस्तान में ही है. Right? And after that, Indian Air Force has indeed upgraded those radio sets. And now we are in a much better and a higher grade technology. और आप लोगों ने तो अभी देखा है 26 जनवरी की परेड में शिवांगी, the first Rafale pilot, आपके ही बराबर की लड़की है. Right? When I fought Kargil, I was what? 25, 26? And so it is not something, and I was pregnant. I was in that war and I was pregnant. And I said, I will do what I have to do. I did not say, turn cold, turn cold. There was no turning cold. I was there in the thick of hot war. So it is what you learn in academy, what Jaspa you have, what Josh you have, and you use that army maxim in your life, and that says, bash on regardless. I'm not going to stop. No stopping for anything. So that is true for all of you, wherever you are. Today you are in college. So bash on regardless. Don't let anything stop you. Whatever you want to do, you are in a golden age. You are in a golden time of your life.
मिडास टच, जहां हाथ लगाओगे वो तुम्हारा है। तो आप अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी बना सकते हो, सिर्फ मेहनत करो, ऑनेस्ट मेहनत करो। एवरीवन आस्क्स मी, मैम हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, बट आई ऑलवेज हैव वन क्वेश्चन, and that question I will put to each one of you. How much can you sacrifice for your dreams? We all have big golden dreams, but none of us want to sacrifice even a Netflix binge for that. We only want the dream to come true, but we are not willing to sacrifice for that dream. So always know that you will have to sacrifice for your dream. So bigger the dream, bigger the sacrifice. Be ready for it. And so if you do it, then yours will be the sky and yours will be the glory. You will be there. So write down today what I want to achieve and what am I willing to sacrifice. How much more time can I give? How much more peace I can give to my mind by working even harder? What is my level of preparedness? What more I have to work on? तो उसमें दोस्त छूटेंगे, और दोस्ती घर फूंक तमाशा है, वो छूटनी भी चाहिए। बहुत ज्यादा दोस्ती इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। Have handful friends. Surround yourself with the friends who are propelling you ahead towards your dream, not someone who's toxic and bringing you down. So live your life the way you want to be seen as. सिर्फ बोलने में नहीं, करने में। करो, और करने से ही होता है। ठीक है, बोलोगे मैम कितना ज्ञान दे रही हैं। No, ma'am. Ma'am, Kirti is raising her hand. Kirti, you can unmute yourself. Evening, ma'am. Ma'am, I really got goosebumps the way you speak and convey your thoughts. Ma'am, what is your secret and motivation behind it? My secret and my motivation behind it is that I have never given it a thought. Actually, now that you are asking me, I'm thinking, but I don't want to stop. I don't want to stop. And I know the power of the age that you are in. And I really know that the dreams that you see at this age, they come true if you actually put your heart and soul to it. And I also know that if I have to interact with this generation, I have to upgrade myself. I have to speak your language. I cannot, I, I cannot ready this generation of tomorrow with the knowledge of yesterday. I have to have knowledge of tomorrow to be able to, at least knowledge of present, to be speaking to generation of tomorrow. So that is my driving force. I cannot stop upgrading myself, and I feel that if I stop being relevant, I will be redundant, and then a part of me will die, and I don't want to die. Not yet. Yes. Have I Thank answered you. your question? Wow, ma'am. What an amazing, inspiring, and energetic session it is. Thank you so much, ma'am. Now, Thank you. it's time to call up Dr. Juhi Bhatnagar, ma'am, member of Gandhi Study Circle, and Kirti, NSS volunteer of first year, for vote of thanks. Thank you, ma'am. Thank you. A very good evening to all of you. On behalf of Aditi Mahavidyalaya, Gandhi Study Circle, and NSS, it gives me an immense pleasure to thank our chief speaker, Captain Yashika Tyagi ma'am, for sharing her inspirational thoughts of how bravely our armed forces are working and forging ahead to protect our country. Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts, which are bringing all of us having great strength and power to work for the country, work for ourselves, and be true to ourselves. I would also like to thank our principal ma'am, Professor Mamta Sharma,
for giving us the opportunity to be a part of this wonderful talk. I also like to thank NSS coordinator Dr. Mali, Gandhi Study Circle convener Dr. Sunita Parekh, co-convener Dr. Sunita Dhankar ma'am, and our students who have worked really hard to make this event successful. Thank you everyone. Take care and keep smiling. Thank you ma'am. Good evening, everyone. Myself, Kirti, National Service Scheme volunteer. I feel proud to thank and acknowledge the National Service Scheme and Gandhi Study Circle team, those who work really hard behind this event and make this session great and memorizing. Valuable chief guest, your words are really inspiring and motivational for us. I am sure that it will definitely enhance the knowledge and understanding of our students in concern of our nation and Indian Army. Your contribution towards the nation is unforgettable. Your work in your field is unforgettable, and this session with you is also unforgettable for us. Thank you, ma'am, for taking out time for your from your busy schedule and enlightening us with your knowledge. Thank you so much, ma'am. I would like to thank Professor Mamta Sharma, ma'am, for giving us permission to organize this such amazing event. Dr. Mali Savaria, ma'am, Dr. Sunita Parekh, ma'am, Dr. Sunita Dhankar, ma'am, and Dr. Juhi Bhatnagar, ma'am, for guidance and moral support. Also, thanks to all the volunteers for paying attention and making this session more interactive. Thank you so much, everyone. Thank you. Thanks a lot, Kirti. I would really like to thank Yashika ma'am for being there. There is this term bravo. So you stood as a brave woman for us. We salute, your spirit, and that spirit has transcended to us as well. So you have motivated our generations, and that is such a proud feeling for Aditi Mahavidyalaya for having you here, ma'am. And Thank you. also, I would request you to please, if you can associate us with the families or the associations who are working for the families of army warriors. It would be really great for our NSS volunteers to contribute in their rebuilding. Okay, I'll try to find out and we'll let you know. Sure, sure. Thank you, Yashika ji. Thank you so much. ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। एक बारी आप लोग सब अनम्यूट करें अपने आप को और बोलें जय हिंद। 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 थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड गुड नाइट। Thank you, ma'am. Jai. I request everyone to please fill the feedback form, which is there in the chat box. Anjali, please unmute yourself.